Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge is Power. In this video lecture of today's, we will be understanding question number 4, that is the last question of exercise 2.2. Chapter name is the polynomials. So let us see what this question is asking from us. Question is saying find the zero of the polynomial in each of the following cases. Now before answering this question, let us again recap that what is the zero of a polynomial. Zero of a polynomial, in a very simple words, zero of a polynomial is that value of x. It is that value of x for which the whole value of the polynomial will become zero. The value of the polynomial will become zero. एक ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाए, उस x की वैल्यू को मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का नाम देता हूं. So without wasting the time, let us move to the question number 4, that is part 1. ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पार्ट था जो उसमें यूज होगा. अब देखिए, let me take this first part, that is px is equals to x plus 5. ठीक है, एक तो मेथड है कि आप देखिए हिट एंड ट्रायल का यूज कर सकते हैं. You can use the method of hit and trial. For example, ये बहुत सिंपल सा पॉलिनोमियल था. मैंने आपको क्या बोला, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक ऐसी x की वैल्यू है जिस पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए. तो मैं देखता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल px है ये कब जीरो होगा. When the value of this polynomial, that is x plus 5, will become zero. तो इट इज वेरी सिंपल. हम लोग बता सकते हैं कि x को अगर मैं -5 रिप्लेस कर दूं, x को अगर मैं -5 रिप्लेस कर दूं तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल मेरा जीरो हो जाएगा. Now this is a simple case, right? Let me take some difficult case. For example, 49x plus 893 upon 81. Now in this case, this is also a polynomial in variable x, but to easily determine the value, it is quite difficult. In this case it was quite easy कि हमने x की वैल्यू को -5 रख दिया. -5 plus 5 will become 0. So x is equals to -5 is a zero of this polynomial. But यहाँ पर ऐसे assume कर पाना या ऐसे आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है, एंड दैट इज वेरी सिंपल स्टेप. दिस वाज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट कि डिफिकल्ट और इजी पॉलिनोमियल कैसे हो सकते हैं. इसमें कुछ नहीं है. देखिए, अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको उस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वो सारा का सारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है. जो पॉलिनोमियल है उसी को जीरो के बराबर रख देना है. जैसे x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो आपको पता है आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो भी चीज है आप उसको RHS में लेके जाएंगे एंड x विल बिकम हियर -5. सो आप देख लीजिए, ये एक सिस्टमैटिक वे था कि हमने पॉलिनोमियल को ही जीरो रख दिया और मेरा आंसर इधर भी -5 है और इधर भी -5 है, राइट. सो with this we have got the first zero of this polynomial of part 1. Now let us move to the second part. Second part में भी हम ऐसे ही करेंगे. Firstly let me write the polynomial. It says px is equals to x minus 5. So here the polynomial is x minus 5. Simply you have to equate this polynomial x minus 5 with 0. This is a fundamental. Then you have to find the value of x. Obviously you will take this -5 to the RHS side and it will be +5. It will be for +5. So this value is going to be the zero of this polynomial, right? So the answer for the first part was -5. Answer for the second part is +5. क्यों है ये आंसर्स? क्योंकि जब आप इन वैल्यूज को पॉलिनोमियल में डालेंगे तो -5 plus 5 will become 0, and here if you will replace this value x with 5, so 5 minus 5 will be again 0. काफी सिंपल क्वेश्चन है.
Now let us move to the third part. Is also very simple. This question is actually very simple, not a difficult one. Let us see what the third part is saying. It is px is equals to 2x plus 5 px is equals to 2x plus 5. Simply you have to replace this polynomial with 0, that is 2x plus 5 equals to 0, and then try to find the value of x. तो ये plus 5 आपका उधर चला जाएगा. It will be 2x is equals to minus 5. Then you have to still find the value of x. So 2 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में था, तो वो दूसरी साइड जाके डिवीजन में आ जाएगा. So x will be equals to minus 5 upon 2. Now this value of x will obviously make this polynomial as 0. We can cross check also. Let us try to cross check. आप वैल्यू को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. p of minus 5 upon 2 that is equals to 2 into minus 5 upon 2 plus 5, that is 2 of 2, that is minus 5 plus 5 is going to be 0. So it is proved that this is the only 0 of this polynomial. So for the third part, the answer is minus 5 upon 2. Let us move very fastly to the fourth. What the fourth part is saying, let us try to get it. So here the polynomial is 3x minus 2. So just as we did in the last part, just replace this, just equate this polynomial with 0, then find the value of x. Obviously to find the value of x, you have to take this minus 2 to the RHS, that is 3x equals to plus 2. Then 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो x हो जाएगा मेरा plus 2 upon 3, right? Plus 2 upon 3. So this x is equals to plus 2 upon 3 is a 0 of this polynomial. You can also cross check this value. You can just replace this value in this polynomial and this will give you 0. So this x is equals to 2 upon 3 is a 0 of this polynomial. Then we move to the next part, move to the fifth part. So this is part number 5. Px is given to us as 3x. So we have to find the 0 of this polynomial. Simple. We have to just equate this polynomial with 0, and we have to find the value of x. Now to find the value of x, you have to remove 3 from here. So 3 is in the form of multiplication. On going to the RHS, it will be in the division form, that is x की value will be 0. So here in this case, x is equals to 0 is going to be the 0 of this polynomial, right? So the 0 of this polynomial will be x is equals to 0. Very fastly, let us move to the next part, that is part number 6. So it is saying that p of x equals to ax, where a is not equals to 0. Now in this case, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको करना क्या है कि ये जो ax है आपको 0 के बराबर पुट कर देना है, एंड इट इज गिवन टू अस दैट a इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो देखिए ये तो नॉन जीरो है आपका, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 0 अपॉन a. सो दिस इज ऑलरेडी ए नॉन जीरो नंबर. तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ, सपोज 0 अपॉन 2, आंसर विल बी 0, right? So basically in this case also x is equals to 0 is a 0 of this polynomial px. This is quite simple. So here also x is equals to 0 is a 0 of this polynomial. Let us move to the last part of this, which says that we have got the polynomial px equals to c of x plus d. This is a polynomial.
where C is not equals to 0. C and D are real numbers. C and D are real numbers. तो आपके रियल नंबर्स में तो सब कुछ आ जाता है. रियल नंबर्स में तो आप देखिए आपके रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड बहुत सारे नंबर्स, इंटीजर्स भी आ जाते हैं. सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सबको सब हम रियल नंबर्स बोल देते हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट वन इज डेसिमल नंबर्स. फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ जाएंगे, राइट. तो जस्ट वेरी सिंपल मेथडोलॉजी, एज आई टोल्ड यू, you have to just replace this, you have to just equate this polynomial's value with 0. Cx plus d equals to 0, and we have to find the value of x. Our main motive is to find the value of x. So to find the value of x, firstly we'll take this d here. It will be cx is equals to minus d, and then x will be equals to minus d upon c. बिकॉज c यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में था तो यहाँ पर जाके डिवीजन में आ जाएगा. एंड विद दिस वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x. दिस इज x इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन c, एंड दिस विल बी अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, थोड़ा लग रहा है कि कैसे होगा ये. सो लेट अस क्रॉस चेक दिस क्वेश्चन. लेट मी रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ x हियर इन दिस पॉलिनोमियल. सो इट विल बिकम p ऑफ minus d upon c, that is equals to c, x की जगह पे आ जाएगा minus d upon c plus d. So it will be c से c cancelled out, so it will be minus d plus d. Again they will be cancelled out. Final answer is 0. This shows that this value of x is equals to minus d upon c is a 0 for this polynomial. इसका जो आंसर हो जाएगा that will be x is equals to minus d upon c, right. So this x is equals to, so we have find all the values of the zeros of this polynomial. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. Still you face any problem, please feel free to comment in the comment section. एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम लोग यहाँ पर बताएंगे बच्चों को जो उनको फ़ायदा करेंगे एग्जाम्स में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.